So let's go back to the niche selection. Let's go after you select your niche and send it to me. The next step would be to know the problems, needs and desires of your niche. आपको अपनी niche की problems, needs और desires पता होनी बहुत ज़रूरी है. ये बहुत important step है जो आपको ना सिर्फ अपने टारगेट क्लाइंट्स के लिए करना है एंड बट अगर आप किसी भी क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेच रहे हो, यू शुड नो हाउ टू रिसर्च एंड डिटरमाइन द प्रॉब्लम नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ योर नीश, बिकॉज इस पे सारे मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं. इफ़ टू कम अप विद अ कंपेलिंग ऑफर, आपको नीश क्यों, आपको अपना प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड डिज़ायर्स अपनी नीश की पता क्यों होनी चाहिए. लेट मी मेक दिस अ फुल स्क्रीन. So, why you should know the problems, needs and desires of your niche? Because so that you can come up with compelling offer that moves your target clients, makes them buy and connect with them at an emotional level. जब तक आप अपने clients की problems, needs, desires नहीं जानते हो, fears नहीं जानते हो आप, तब तक आप ऐसा offer नहीं बना सकते जो कि उनसे connect कर पाएगा. तो it's very important that you know दी प्रॉब्लम, नीड्स एंड डिज़ायर्स. इसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. आपको अपनी एक्सरसाइज अगेन फिनिश करके मुझे भेजनी है. इसमें यू हैव टू डिटरमाइन दीज 7 थिंग्स अबाउट योर टारगेट नीश. व्हाट कीप्स देम अप एट नाइट, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि उनको रात को जगाती हैं, जिससे वो बहुत कंसर्न हैं, रात को सो नहीं पाते हैं. एंड व्हाट आर दे एंग्री अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में बहुत नाराज़ हैं. हु आर दे एंग्री एट, किस पे किस से नाराज़ हैं. व्हाट आर देयर टॉप 3 डेली फ्रस्ट्रेशंस, रोज़ उनकी लाइफ में क्या फ्रस्ट्रेशंस होती हैं. व्हाट आर देयर सीक्रेट डिज़ायर्स, उनकी क्या डिज़ायर्स हैं जो किसी को नहीं बताते. व्हाट ट्रेंड्स आर अफेक्टिंग देयर बिजनेस, क्या ट्रेंड्स उनकी बिजनेस अफेक्ट करें. हु आर द टॉप 10 की इन्फ्लुएंसर्स इन देयर निश, एक्टिवली शेयरिंग देयर नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री इशूज़ on YouTube, niche blogs and who are writing books on the topic. So just to give you a context कि how does this apply to आप इसको कैसे करना है, मैं आपको अपने केस में बताता हूँ. फॉर एग्जांपल फैशन के बस जब मेरे बिजनेस की बात करते हैं, मेरी निश की बात करते हैं. सो माई टारगेट निश इज़ ऑनलाइन फैशन रिटेलर्स. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको रात को क्यों नींद नहीं आती है. तो आई आफ्टर डिड ऑल माई रिसर्च एंड क्लाइंट से बात करने के बाद मेरा होमवर्क जब मैंने किया, तो नाउ आई नो, बिकॉज आई बीन टू द बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years now, more than 3 years now. I know that what they're most worried about is that जो फैशन रिटेलर्स जब अपने बिजनेस पैसा लगाते, they spend a lot of money on building their site. Probably thousands of dollars they invest, and they'll spend a lot of money on buying and purchasing inventory. वो अपनी इन्वेंट्री में पैसा लगाते हैं. तो रात को उनको टेंशन ये रहती है कि इतनी सारी इन्वेंट्री जो मैंने ख़रीद रखी है कैसे बिकेगी, जो पैसा फंसा लिया मैंने अपने इन्वेंट्री में, वो कैसे रोटेट करूँ इन्वेंट्री को. और उनको लगता है इतना पैसा जो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट लगा दिया है, अभी इसकी वो वापस कैसे लाना है एंड बिजनेस को कैसे ग्रो करना है. तो व्हाट कीप्स देम अप एट नाइट, इफ़ आई टेल माई क्लाइंट्स ड्यूरिंग माई कॉल that I know that you have invested a lot of money in your website, in building this site, and you have invested a lot of money in your inventory, and I know how it feels to not being able to get sales. So they can relate to me. उनको लगता है कि हाँ, this guy knows me, he knows about what's really worrying me. And what are they angry about? For example, I know a lot of my clients are angry at either with their development companies जिनके साथ वो काम करते हैं, जो कि उनकी साइट में बहुत सारा पैसा लग गया because of the mistakes they did during the development of their site. It makes them angry. And for example, a lot of my clients tell me that, Pulkit, before I came to you, I have already hired a digital marketing company that promised me a lot. उन्होंने मुझे बहुत सपने दिखाए, लेकिन I paid them well, लेकिन मुझे ROI कुछ नहीं बनाई. उन्होंने Facebook ads में रन करे, इतना पैसा लगा, but मेरा business, it did not grow. So I'm really angry at them. So, but if I acknowledge this fact that I know that it must be really frustrating for you to work with your previous digital marketing company. So if I talk in that language, it really makes a difference when I try to close a deal with them.
And who are they angry at? I know that they're angry at their previous companies whom they hired to build their site. They might be angry at their logistics company. They might be angry at the previous digital marketing company they hired. So what are their top 3 daily frustrations? मेरे केस में their top 3 daily frustrations are कि उनको लगता है इतने सारे marketing channels and fashion retailers को लगता है, and they get confused कि मैं Instagram पे टाइम लगाऊँ या मैं Facebook ads में spend करूँ या मैं SEO का ध्यान दूँ. तो there's so much they have to do that they get overwhelmed. So it's one of their biggest daily frustrations that I know. And what are their secret desires? मेरे target audience की secret desire ये होती है कि वो जानना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि वो कहीं मार्केट में जा रहे हो and they find someone wearing their dress or somebody carrying their handbag. That's a secret desire. They don't tell anyone, but since I've interacted with so many fashion retailers, I know उनके secret desires ये है कि वो किसी टॉप स्टोर में, फॉर एग्जांपल शॉपअप या फिर बड़े बड़े शोरूम्स में, स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट्स को फीचर कर पाएँ, जहाँ से उनके पास रिकरिंग अच्छी सेल्स आ रही हो, एंड कहीं पे भी जाते जाते उनको कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जो कि उनके हैंडबैग को यूज़ कर रहा हो. तो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग फॉर देम. सो दैट्स अ हिडन डिज़ायर दैट दे डोंट टेल एनीवन, बट आई नो, and if I acknowledge that I understand that how great it feels, suddenly they can relate with me. And what trends are affecting their business? मुझे पता होता है कि मेरे जो clients होते हैं, for example, I know Instagram is a really hot platform जो कि बाकी businesses उनके competitors use कर रहे हैं to create sales, but they are struggling on that platform. So I know कि मेरे business में मेरे niche में क्या trends है जो मेरे clients को affect कर रहे हैं. And I know about the top 10 key influencers in my niche. मुझे ये पता है कि सोफिया मरूसो हो गए, एंडी डन हो गए, बोनोबोस के. तो you might not know about these people. सोफिया मरूसो नास्टी का एक बहुत अच्छा ब्रांड था जब मैंने स्टार्ट माई बिजनेस. नाउ इट्स bankrupt, but in those days she was a key influencer talking about fashion, online fashion, how to start your business, how to position a business. I learned a lot. मैंने उनकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस वीडियोस देखी. एंडी डन ने बोनोबोस के फाउंडर्स. तो बेसिकली द आइडिया इज, अगर आप हेल्थ केयर में होते हो या अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर सेलिंग में आप नीश सेलेक्ट करते हो, यू शुड नो हु द की इन्फ्लुएंसर्स इन योर नीश आर, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड आपको ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है बेसिकली. तो आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस एंड स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चंस. अ क्विक नोट, यू डोंट हैव टू इट राइट अवे. आपको ये सब चीज़ें अभी करके नहीं भेजनी है. The idea is that these are 7 things that you should know about your target niche to be able to know the problems, needs and desires. आपको इन questions को answer करना है. It might take you several weeks, several months. I still learn new things when it comes to the problems, needs and desires of my target audience. You have to keep researching and documenting, but for now I want you to spend few hours on this and send me in your initial research. So let's go back to the after finish this exercise. Now you might be wondering that अभी तो मैंने niche select भी नहीं करी है, and अगर मैं niche select कर भी लेता हूँ तो how do I know? For example, if you want to work with SaaS companies जो कि software sell करती हैं, if you want to help them, आप उनको help करना चाहते हो उनकी digital marketing में, how do you know their problems, desires, because आपको उसमें भी experience नहीं है. या फिर if you are a designer, you want to start let's say shooting videos that help these SaaS companies, software companies sell more softwares. उनको आप ऐसे videos बना के demo videos बना के देना चाहते हो, but you don't know what their problems, desires are. अगर आप ये सोच रहे हो कैसे करना है, तो thankfully there are exercises. There is a way that you can know the problems, desires of your target clients before getting into the niche, just like how I did it. So you can read books on the topics, and you can check the reviews on Amazon. I don't expect you to read the complete books, but purchase few books जिन पे आप रोज थोड़ा time spend करो कि so that you keep learning about your niche. So buy few books on Amazon if you can, but more than that, what I want you to do is, अगर आप बुक नहीं भी खरीदते हो, आप अमेज़ॉन पे जाते हो और आप अपने टारगेट निश के ऊपर देखते हो कि फॉर एग्जांपल हाउ टू
you want to work in the real estate, you want to work with residential real estate companies who are जो builders हैं जो residential projects deliver कर रहे हैं, you want to reach out to them and tell them that I want to help you, either help you improve your branding, improve your website, or I want to help you uh, uh, acquire more customers, आपकी sales बढ़ाने में help करना चाहता हूँ, whatever you want to do. In that case you'll go to amazon.com and see जो Indian real estate के ऊपर leading बुक्स कौन सी हैं, जस्ट सी उनके नीचे लोग रिव्यूज़ का क्या रिव्यूज़ छोड़ रहे हैं जो लोगों ने बुक परचेज करी. व्हाट पीपल डू इज़ बिकॉज दीज आर द पीपल हु वांट टू लर्न हाउ टू सेल प्रॉपर्टी बेटर, वो वहाँ पे उन बुक्स को पढ़ के आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ दैट दे कुडंट लर्न फ्रॉम द बुक. तो while they leave the review, they leave lot of hints for you that you can use. तो आप amazon.com पे जाओ. अगर आपको इंडिया amazon.in पे बुक्स के रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं, गो टू US. अगर आपको टारगेट मार्केट फॉर एग्जांपल US है तो आप amazon.com पे जाओ, जस्ट फाइंड द पॉपुलर बुक्स एंड उसमें देखो लोगों ने क्या रिव्यूज़ लीव किए हैं, रीड देम एटलीस्ट एंड you'll get lot of insights about the real estate niche जो कि आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ करना आई विल टेल यू इन द कमिंग स्लाइड्स. But for now, here's how you can learn more about your target, about the problems, needs, problems, fears, and desires of your target niche. You can email people in the niche and ask them about about their problems, fears, and desires. You can also speak to them on phone. That's an exercise I did. मैंने काफ़ी fashion retailers को phone किया, email किया उनको. I asked them that I'm a student. I'm trying to understand the problems of fashion retailers. What problems you face? Can you spare some time? So maybe what I do is I send them a few questions to answer. A lot of people do reply, telling them कि उनकी क्या problems हैं, and often I get them to talk to me on phone for a 15-minute call. And surprisingly, many people say yes because there are people who want to help you. And in the call, I ask them कि आपको you're running a business, आपको मार्केटिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं, व्हाट फ्रस्ट्रेट्स यू, एंड आस्क देम डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आई मेक माय नोट्स. दैट्स अ शॉर्टकट. इफ यू वांट टू लर्न more, you can just start contacting your target, the companies in your target niche, and ask them questions directly. You'll be surprised to how many people will actually reply to and will agree to talk to you on phone. You can engage with these companies on Facebook, LinkedIn groups. आप LinkedIn groups पे जाके, Facebook groups में जाके इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल एक्चुअली आंसर योर क्वेश्चंस. You can go and check the comments of people on videos and pictures of influencers on Instagram and Facebook and YouTube. आप जो influencers हैं, like इन सब के जो videos होते हैं, conference videos होते हैं, या फिर इनके जो popular videos होते हैं, उनके नीचे आप comments जाके check कर सकते हो. And this one is gold, जो कि मैंने apply किया and had a tremendous profound impact on my business. That is, I have watched the videos, conference videos, recordings of key influencers in my niche about the burning topics, problems जो हैं, जो for example fashion retailers like I said Sophia Maruso और Andy Dennison में काफ़ी videos share करते थे. Burberry के जो founder थे Angela, वो बहुत she used to talk a lot about why Burberry is so successful. So I consume a lot of content, and since I was naturally interested in industry, I could spend so many hours just listening to these people, making my notes. And मैंने जो notes बनाए थे, they were just I would say thousands of words. जो and I in fact I used जो मैं notes बनाए थे, I converted them into an article, and that went really viral. I'll tell you how I went through the process. I don't want to digress it at this step, but I want you to remember is that आप जितनी information in conference videos को watch करके YouTube पे पा सकते हो, it's not even funny. You can get a lot of condensed information in 1 hour long video than how much you have to scour through the internet reading articles or
रीड बुक्स एंड रिव्यूज़, वीडियोज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दैट इज़ वेरी वेरी एक्शनेबल. व्हाट हैपेंस इज़ दैट जब ये इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं अपने नीश के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, तो दे टॉक अबाउट उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे, उनकी कंपनीज में क्या प्रॉब्लम्स आई, इंडस्ट्री में ब्रॉडली स्पीकिंग क्या यूनिक चैलेंजेस चल रहे हैं जो हर कोई फेस कर रहा है, एंड हाउ डिड दे ओवरकम दोज चैलेंजेस. सो वट एवर दे से वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एंड दैट्स लॉट ऑफ वैल्यू. उससे आप इंडस्ट्री को जानते हो, एंड यू स्टार्ट सिंस यू वॉच दीज वीडियोज़ एंड आप देखते हो आप क्या वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं, किन टॉपिक्स में वो बहुत इंटरेस्टेड हैं. तो व्हेन यू टॉक टू योर क्लाइंट्स इन दैट नीश, सिंस यू नो जो बड़े चैलेंजेस होते हैं, यू नो about other companies, how they overcome those challenges, and now when you talk to your clients, they can sense that you have done your homework, you know the niche, you know the key influencers, आपको इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं इनके बारे में पता है. तो you start suddenly talking in the language that your clients expect you to be talking to them. So it's a real gold. Just go to YouTube and start. For example, let me just show you on live screen how you can do this research. For example, if you search for how to market SaaS business, or let's just write SaaS marketing. In that case you'll see, अगर आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और कॉन्फ्रेंस वीडियोस आपको आएंगी. इसमें आप कॉन्फ्रेंस टाइप कर देते हैं हम अगर. So you'll see a lot of conference videos. For example, 6 funnel optimized strategies currently to double your growth. That's slightly generic. Godfather of SaaS, Jason Lemkin, shares his SaaS community criteria investing. So basically आप इन सब वीडियोज़ को जब वॉच करोगे और आपका अगर ऑब्जेक्टिव है you want to work with SaaS companies helping them grow their business, in that case you'll get a lot of you'll get a lot of will tell you about their personal experience. Then you can make your notes, and आप जैसे इन वीडियोज़ को देखोगे you can start applying the knowledge while dealing with your clients in your marketing and everywhere in your business. So going back to what we were doing, after you and don't think that आपको एक बार करके छोड़ दें. That's an exercise that you have to do for 2-3 months. मैंने जब business अपना start किया था, I completely merged मैंने पूरा डूब किया था इस फैशन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में. आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ नोट्स, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. एटलीस्ट 2-3 मंथ्स आपने खूब वीडियोस वॉच करनी है एंड खूब आपने रिसर्च करनी है. आई अंडरस्टैंड आपसे दैट्स नॉट समथिंग यू कैन डू इन फ्यू डेज, बट जस्ट कीप डूइंग इट until you feel confident that you understand the industry really well. So next step, after you select your niche, after you know the problems, needs and desires of your customers, the next step is to select your services. You have to pick 3 services that you can offer to your target niche to solve the burning problems of your target audience. That brings us to the third exercise. Third exercise जो आपने मुझे करके भेजनी है, you have to list 10 skills जो आपके पास है and or you want to develop. For example, Photoshop designing, Facebook marketing, programming, these are skills. आपने इनकी list बनानी है, and based on the top 3 skills you have to select 3 services that you want to offer as a service, as a premium service. तो for example, अगर आप you want to, आपको Photoshop designing आती है या फिर आप सीखना चाहते हो, you can offer UI designing services to your target niche. अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो यू कैन सेलेक्ट ए फेसबुक मार्केटिंग सर्विसेज एंड स्टार्ट सेलिंग इट टू रियल स्टेट residential real estate companies to help them acquire more customers, or visa consulting companies.
तो बेसिकली आपने मुझ इस एक्सरसाइज में व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ द स्किल्स यू करंटली हैव एंड उनमें से कौन सी टॉप 3 स्किल्स हैं जिनको आप एज अ प्रीमियम सर्विस सेल कर सकते हो, एंड देन आउट ऑफ दोज 3 सर्विसेज जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, पिक एनी 2 because आपकी niche में we'll focus on the top 2 services that you can provide. We'll not get into too many services because the idea is to be able to build an expertise and a portfolio so that you can charge a premium. Initially आप 2 services से ज़्यादा sell करने की कोशिश करते हो तो you will spread yourself too thin. That's not something I recommend. I want you to provide any 2 services that you can really master and provide tremendous value to your customers, to your clients, so that you can start growing quickly. Now, important considerations while you select your services. जब आप जो 2 services final में select करते हो, your services should solve a burning problem. कोई आपकी बड़ी problem solve करनी चाहिए आपकी, अगर या तो उनकी sales grow करने में आप उनको help करो, उनकी आपका अगर उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो एक इलस्ट्रेशन, एक कोई वीडियो बना के जिसमें कि आप अगर आप इफ़ यू आर क्रिएटिव पर्सन, सो वट एवर यू डू इट शुड सॉल्व अ बर्निंग प्रॉब्लम. बर्निंग प्रॉब्लम वो होती है जो कि रात को आपको सोने में भी जब रात को लेट हो आपको होता है कि नेक्स्ट डे मैं उठूँगा तो आई हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम. दे शुड रियली फील पेन व्हेन दे थिंक अबाउट देयर प्रॉब्लम. कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बर्निंग प्रॉब्लम वो होती है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान मोटा होता है तो वो पतला होना चाहता है सो दैट he or she can get married down. That's a burning problem. If somebody is not making enough money, अगर वो उनकी if somebody is not finding a job, for that person to find a job is a burning problem. If somebody has started a business and is not getting sales, that's a burning problem. तो आपकी कंसल्टिंग सर्विसेज हैं उसको बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. इट्स नॉट शुड बी समथिंग दैट्स मीडियोकरली मॉडरेटली पेनफुल, शुड बी रियली पेनफुल. जो आपकी सर्विस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, you should be with your service you should be able to charge $500 to $2,000 per month for an ongoing campaign. अगर आप मंथली चार्ज कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 500 से लेके $2,000. $500 is what you might have to start with if you don't have any portfolio. I'll give you strategies and tips how you can start closing. You can close a bigger project even when you're starting, but एटलीस्ट $500 पर मंथ आप चार्ज कर पाओ. ऐसी सर्विस होनी चाहिए पर मंथ. अगर आप पर मंथ चार्ज करते हो, अगर ऑनलाइन सर्विस फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है जिसमें आप लोगों को उनकी फेसबुक एड्स को मैनेज करने में हेल्प करते हो, तो बेयर मिनिमम दैट यू शुड बी एबल टू चार्ज इज $500 बेयर मिनिमम. Ideally what I'll help you is to close these projects at least $1,000. I typically charge $1,500 to $2,000 per month is how much I charge a single client, but anything that cost your client less than $500 is not worth your time. तो 1500 से $2,000 एटलीस्ट आप चार्ज कर सको, ऐसी सर्विस आपकी होनी चाहिए. एंड $2,000 पर मंथ फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट. अगर आप किसी की आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो आपकी सर्विस वर्डप्रेस साइट भी है तो यू शुड बी एबल टू चार्ज एटलीस्ट $2,000 फॉर अ प्रोजेक्ट दैट टेक्स यू 1 month. अगर किसी वर्डप्रेस साइट आप बना रहे हो, यू एस्टिमेट दैट it'll take you 1 month to build that site. So $2,000 per month is what you should be able to charge. So don't pick a service that forces you to work for pennies. आपने इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा. Likewise कि जैसे आपने नीश पे ध्यान रखना है कि जब नीश सेलेक्ट करो आपकी नीश should be really profitable. For example, doctors, anybody who becomes a doctor, for example a surgeon, chances are that they spend a lot of money on their education to become a doctor, and then when they start their practice, their business, they have the money that is required to grow their practice. तो healthcare बहुत अच्छी इंडस्ट्री है. SaaS companies बहुत अच्छी इंडस्ट्री बिकॉज उसमें there are a lot of companies that have a lot of funding, जिनके marketing budgets बहुत ज़्यादा होते हैं. They spend several $1,000s every month in India and abroad. So it's a great niche. Visa consultancy is a great niche. These people they make a lot of money. They get a lot of money from universities to get study visas and send students to these companies in Australia and America. So बहुत पैसा कमाती हैं जो visa consulting companies होती हैं. That's a great niche.
डोंट सेलेक्ट अ नीश. फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट के साथ आपने काम नहीं करना, जो छोटा मोटा डेंटिस्ट है जो कि छोटे मोटे क्लिनिक को रन कर रहा है. प्रॉब्ली ही माइट नॉट हैव द बजट टू अफोर्ड और हायर अ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट जो आई वॉन्ट यू टू बी. तो नीश सिलेक्शन में आपने ध्यान रखना है कि यू वर्क विद अ नीश दैट has money in their pocket, who can spend money to grow their business. For example, I do not work with any client for marketing who has a marketing budget less than $2,000. If they tell me that their monthly budget is $1,000, $500, I do not waste my time talking to them, because I know I cannot give them any value, and it will be complete waste of time for them as well as for me to be talking to them. सिमिलरली आपने नीश सिलेक्शन में ध्यान रखना है. लाइकवाइज जब आप अपनी सर्विसेज को आप सेल करते हो तो मेक श्योर कि आपकी सर्विसेज में आप उनसे प्रीमियम चार्ज कर सको. बाय प्रीमियम आई मीन एटलीस्ट $1,000 आप उनको चार्ज कर सको. दैट्स व्हाट आई विल टेल यू, हाउ टू चार्ज देम एटलीस्ट $1,000. एंड जब आप कोई वन टाइम प्रोजेक्ट पिच करते हो तो यू शुड बी एबल टू चार्ज $2,000 प्लस फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट्स टू देम. सो कंक्लूजन ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 3 एक्सरसाइज, आपने तीनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके मुझे भेजना है. आई अंडरस्टैंड दैट यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट इन फर्स्ट वीक. इट माइट टेक यू couple of weeks to finish the exercises, to do the research, to select your niche, to do the research, to understand the problems, fears and desires of your target niche, and then अपनी सर्विस सिलेक्शन में आपको it might take you more than a week, I understand, but you have to complete these exercises and send them to me and get my approval. Until you then आप मेरे approval के बिना I suggest that you do not select a niche and start spending time on it. तीनों exercises आपने finish करके मुझे भेजनी है. So after you do the exercises, you will know आपने कौन सी niche में अपनी consulting services sell करनी है. Doesn't matter, designing services and programming services हैं आपकी, digital marketing services हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, कॉपी राइटिंग सर्विसेज हैं, आपने एक नीश प्रोवाइड करनी है एंड उस नीश को आपने मेरा अप्रूवल लेना है बिफोर यू स्पेंड टाइम ऑन इट. यू शुड नो अबाउट द प्रॉब्लम्स, नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ योर नीश. आपने रिसर्च करनी है बेस्ड ऑन द टिप्स आई जस्ट गिव यू, एंड यू हैव टू सेंड दोज टू मी. एंड यू शुड नो द टॉप 3 सर्विसेज आपकी जो हैं, आपने मुझे बतानी है कि आपने कौन सी 3 सर्विसेज हैं, उसमें से आई हेल्प यू फाइनलाइज द टॉप 2 सर्विसेज दैट यू कैन प्रोवाइड. अगर आपको सर्विसेज सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है, इफ़ यू थिंक यू डोंट हैव एनी स्किल्स, इवन देन just get down a call with me and I'll help you select your services. For example, I can tell you अगर आप कौन सी वो skills हैं जो आप कम time में acquire कर सकते हो. In case if you think आपके पास कोई skills नहीं है, if you can think of good skills, in that case I'll help you select your skills. The point here is you have to again finish your exercises, send them to me for approval before you move on to the week 2 in which we'll do the sales training. So that's pretty much it for this session. I hope you enjoyed it. In the next video, we'll talk about defining your target audience and how to do that. Alright, so I'll see you in the next video.